Hello students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video, we will be discussing important current affairs for 29th of March. The session will be quite interesting students, so do pay attention till the end. We upload the daily current affairs video students at 5 a.m. in the morning. This session is quite important. So I want all the students watching this video to do watch these sessions early in the morning. Next thing students, in this video we will be talking about a contract for anti-tank missile and light vehicles. Next thing we will be talking about Union Minister C.R. Patil has launched a book Ripples of Change. Then an MOU has been signed for geospatial audit enhancement, and we will be talking about the Huron Global Rich List. There are many more news in this video students, so stay tuned with us till the end. Also, if you are new to our channel students, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025, and PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via first social bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satya Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venue as their new chairman. Then Vikas Kaushal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as new MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director, and Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Edelweiss ARC, that is your asset reconstruction company.
Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Vetan sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner students. Now let's move to some other MCQ questions. Let's start with national affairs students. Ministry of Defence, they have recently signed a contract worth 2500 crore rupees for anti-tank missiles and light vehicles. Very important students, take a note of this. Here in this video students, first thing you need to remember here is about the amount, that is 2500 crore rupees contract has been signed. It has been signed for anti-tank missile, right? These are the missiles that destroy the tanks, correct? And the light vehicles. This procurement will be done under the IDDM. What is this IDDM? That is Indian indigenously designed, develop and manufacture, so that Indian manufacturers, the local manufacturers are benefited here, right? If we look at the contract here, it is for first is NAMIS, that is your NAG missile system tracked version. This will be costing around 1801 crore rupees. It has been developed by Hyderabad, Telangana based Defense Research and Development Laboratory, that is an arm of DRDO only, right? This has anti-tank capabilities. Second is for the light vehicle procurement. Here the cost will be coming out to be 6,698.66 crore rupees and 5,000 such units will be procured here. And who is the manufacturer here? Force Motors Limited. It is Pune, Maharashtra based along with Mahindra and Mahindra. Right, so these two things will be procured here. Next is Union Minister C.R. Patil has launched a book that is Ripples of Change. I repeat, C.R. Patil, right? He's our Union Minister of Jal Shakti, has launched a book that is Ripples of Change, Gender Transformative Rural Wash Programs in India, and an upgraded website also has been launched for the Ministry of Jal Shakti. So two things. First is your book and second is the upgraded website. This initiative here aligns with Swachh Bharat Mission Gramin and Jal Jeevan Mission to promote the inclusive development. If we talk about this book, it will be published by Department of Drinking Water and Sanitation under Ministry of Jal Shakti and UNICEF India. Correct. Next thing is CAG, that is your Comptroller and Auditor General of India, has entered into an MOU with BISEC-N for Geospatial Audit Enhancement. So here Comptroller and Auditor General of India, they signed this MOU, that is Memorandum of Understanding, with Gandhinagar, Gujarat based Bhaskaracharya National Institute of Space Application and Geoinformatics. This comes under MEITY. And why this MOU has been signed? To modernize the audit process using the advanced technologies so that all the functioning, the operations, the working of the companies are going good. This will enhance the auditing capabilities. It will leverage artificial intelligence, machine learning and big data analytics to do the auditing of these organizations, right? And here both the organization, they have agreed to develop a customized platform for auditing analysis. Next is Huron Global Rich List was released recently for 2025 students and Elon Musk has secured the top position here. Mukesh Ambani has emerged as the India's richest person. Take a note of this, and he's the world's 17th richest person, right? And he has a net worth of almost $100 billion. Correct? This report was released by Huron Research. Correct? And one more correction here students, Mukesh Ambani is not with $100 billion, he is close to $97 billion, right? Now if we look at, let me show you the list first, then we'll proceed ahead. You can see here,
Elon Musk with 420 billion net worth. Then second Jeff Bezos. Third Mark Zuckerberg. Fourth Larry Ellison. Fifth there is Warren Buffett. Right. And further, if we see it here, you can see that Mukesh Ambani followed by the chairman of Adani Group, Gautam Adani, with a net worth of 97, and chairperson of technologies, Roshan Nadar Malhotra, with a net worth of $40 billion here. Also, she became the fifth richest woman in the world. Also, the first Indian woman to enter the global top 10 wealthiest women list. Right. Also remember students, this year it was the 14th edition of this Huron Global Rich List that was released, and in this list a total of 3,442 billionaires were listed out of 71 countries. And if we see, maximum number of billionaires are from USA. They have topped the list here with 870 billionaires. China is on the second position with 823 billionaires, and our country India is on third position with 284 billionaires. Right. And New York, it has reclaimed the position for the maximum number of billionaires, that is the billionaire capital, whereas London records the second. Next students, here just I mentioned these things, right? And moving on. Next, we are talking about the 19th edition of SMW, that is your Singapore Maritime Week, right? This was held from 24th to 28th of March, right? And it is your pioneering maritime innovation and collaboration, correct? So this Singapore Maritime Week, it was held from when to when? From 24th to 28th of March. This was the 19th edition of this Singapore Maritime Week. Right here, this week was organized by the Maritime and Port Authority of Singapore. Correct. And here it was basically commemorating the 60 years of the nation building. There is a theme also here, students. Theme being actions meet ambition. Right. This is the theme that you need to remember for this Singapore Maritime Week. From India, Union Minister Sarabandana Sonowal was participating here, right? He represented India. Also, India and Singapore, they signed a letter of intent for collaborating on green and digital shipping corridor. Next is GFCI 37. What is this GFCI? GFCI is your Global Financial Centers Index, right? 37. Right, that means this was the 37th edition of this Global Financial Centers Index, and GIFT City, that is in Gandhinagar, Gujarat, is leading in the reputational advantage and improves the fintech ranking. This report is released by China Development Institute in Shenzhen, China, right, and in partner with Z Yen Partners. This semi-annual report, it evaluates the competitiveness of 119 financial centers worldwide, serving as a critical reference for policy making and decision making, right? And we know that GIFT City is taking lead in India. This is located in Gandhinagar, Gujarat, and it has achieved the top rank in the reputational advantage category and improved their position from 45th to 40th in this fintech ranking. And it is New York City's that is secured the top position here, correct? Followed by UK on the second position, Hong Kong third position, right? Here you can see New York first, London second, Hong Kong third, Singapore fourth, San Francisco fifth, GIFT City, that is in Gandhinagar, Gujarat, 46th, Mumbai 52nd, and New Delhi at the 60th position. Next students, next we are talking about Indonesia has joined the BRICS-backed New Development Bank as their 11th member. Another important news, students, that I need you all to remember, which country became the 11th member of the New Development Bank? That is your Indonesia, right? New Development Bank, earlier it was your BRICS Development Bank, correct? And here this decision was approved following a meeting between the Dilma Wana Rousseff, as you can see here, right? Here is the Prabowo Subianto, the president of Indonesia, right? So the president of New Development Bank and Prabowo Subianto, the president of Indonesia, they had a meeting and where they discussed that they will be now becoming the member of the New Development Bank, right? Also remember, in January, Indonesia became the 10th member of BRICS. Next is IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, has released the first green status assessment for lion in Africa and India. I repeat, this is the first green status assessment for the lion. What is the scientific name of lion? It is Panthera leo, right? This is the scientific name. This report has been termed the lion as largely depleted, right? And it is listed as vulnerable
into the red list of IUCN. Correct? That means the lions are getting vulnerable. Also, this is the IUCNs. They have introduced the first green status in a paper in the journal titled Conservation Biology in 2021. So here we are talking about lions in Africa and India, and it is stating that their status in the red list of IUCN is vulnerable. Correct? Next, if we talk about IUCN, students, can you tell me where is the headquarter of IUCN? It is in Gland, Switzerland, right? And it was established in 1948. Next is banking and finance. Students, IREDA, they have secured 26 billion Japanese yen ECB facility from SBI Tokyo. What is this ECB? ECB is your external commercial borrowing, right? We know that Japan, what they are doing is they are increasing their interest rate, which is very dangerous for economy globally, right? We will not go into the detail in that scenario, but just remember they are increasing their interest rate, right? Coming back, New Delhi based state owned IREDA, right? That is a Navratna CPSE under the Ministry of New and Renewable Energy. They have signed a loan worth 1476 crore rupees, that is equivalent to 26 billion Japanese yen, and this is for raising the external commercial borrowing from India's largest public sector bank, that is SBI's branch, that is in Tokyo, Japan. This facility agreement also includes a green shoe option of 10 billion Japanese yen. This unsecured loan facility, it is signed for a period of how many years? It is signed for a period of 5 years, and it will be repaid in a single payment at the maturity, right? Also here IREDA, their landed cost is projected to be less than 7%, thus making it more cost effective compared to the similar tenure loans in the domestic market. So IREDA secured this amount of loan from SBI, that is in the branch of SBI, that is in Tokyo, Japan. Coming back for IREDA, who is the chairman and managing director here? Pradeep Kumar Das, headquartered in New Delhi, established in 1987. Next is JICA, that is we call JICA, Japan International Cooperation Agency. They have signed 6 ODA loan agreements worth 11,181 crore rupees with the government of India. ODA is your official development assistance, right? I repeat, ODA, it is your official development assistance loan agreement. 6 of these loan agreement has been signed with the government of India, totaling around 11,181 crore rupees. These 6 agreements or loan agreements will include funding for seawater desalination plant, biodiversity conservation, forest management. Let me show you here: seawater desalination plant, biodiversity conservation, forest management, aquaculture development, and the expansion of the Delhi Metro network. A substantial sum of 4,649 crores will also be allocated for Delhi Metro's project phase 4. An additional investment of 3,065 crore rupees has been earmarked for the seawater desalination plant, right? And so on. Correct? So total of 6 loan agreements has been signed here. Moving on, next is RBI has imposed a penalty on HDFC Bank, Punjab and Sindh Bank, and KLM Exiva Finvest, right? And you need to know here is the amount of penalty that has been imposed on them. On HDFC Bank, it is 75 lakh rupees for non-compliance with RBI's KYC guidelines. Then for PSB, that is your Punjab and Sindh Bank, a penalty of 68.2 lakh rupees, and on KLM Exiva Finest, it is 10 lakh rupees for not complying with the dividend declaration requirements. So these are the penalties that has been imposed on these organizations. Next is Zuno General Insurance. They became the India's first insurer to integrate PHYD as standard feature in motor insurance. Now, what is this PHYD? Pay how you drive, right? This is a standard feature in the motor insurance policies now, right? And here the first insurer that became to integrate this pay how you drive feature, right? This is your Zuno General Insurance. Now, what is this pay as you or pay how you drive feature, right? This will use mobile telematics to elevate or to evaluate your driving patterns, right? How fast you are driving your car, what are your braking habits, right? What are your distraction levels? All these things will be monitored, right? And then a particular score will be given to you, and based on the base of that score only your insurance will be integrated, right? So it is Zuno General Insurance that became the India's first insurance to integrate pay how you drive feature as a standard feature in the motor insurance.
right? Also, this makes Juno the first insurer in India to integrate mobile telematics into car insurance policies at no additional cost, shifting from traditional fixed pricing to behavioral based premiums. If you are driving good, your premium can also be reduced in that case. Next is Luminous. They have signed an MOU with State Bank of India to expand solar financing in India. I repeat, Gurugram, Haryana-based Luminous Power Technologies Private Limited, that it is India's leading solar energy solutions company. They signed an MOU with Mumbai, Maharashtra-based India's largest public sector bank SBI to expand its access to solar financing across the country. Take a note of this. As per the MOU, the eligible customers can avail a maximum of 10 crore rupees, thereby eliminating the financial hurdles to solar adoption. And the loan disbursed will be repaid for a maximum period of 10 years. Next is awards and recognition. Rana Das Gupta has won the Yale's 2025 Vidmam Campbell Prize for non-fiction. I repeat, Rana Das Gupta has won the Yale's 2025 Windham. As you can see him in the picture, who is Rana Das Gupta? He is a very famous British author. He is a famous British author of Indian origin, right? And he has been named as the winner for the 2025 Wyndham Campbell Prize in the non-fiction category. Remember this also. He won this prize in the non-fiction category. He was awarded by Yale University, that is a USA based university, right? Take a note of this. Moving on, next is appointments and resignation. Students, Rajiv Gauba has been appointed as the 5th full-time member of Niti Aayog. I repeat, Government of India appointed Rajiv Gauba, the former Cabinet Secretary of India, as a full-time member of New Delhi-based Niti Aayog with immediate effect. His inclusion in Niti Aayog is expected to strengthen the institution's strategic planning and policy formation efforts, contributing to India's long-term development goals. Next is science and technology. Students, SpaceX, they have launched HEX-20's Neela satellite into space. Now, what is this Neela? Neela means blue in Hindi, right? Just letting you know. Correct? So, recently, Trivandrum, Kerala based HEX-20 India, a small satellite manufacturing startup, they have recently achieved a significant milestone by launching their maiden satellite by the name Neela using the SpaceX Transporter 13 mission. It is a service offered by SpaceX, founded by Elon Musk, right? And here, this Neela mission, this satellite is designed to test and validate the HEX-20's indigenously developed subsystems, right? And this satellite is named after the Kerala's Neela River, right? This Neela River is in Kerala, right? Take a note of this, students. Moving on, if we talk about this HEX-20, can you tell me where is the headquarter? It is in Trivandrum, Kerala, in Technopark. It was founded in 2020. Next is related to environment. Students, BU researchers, right? That is your Behrampur University, that is in Odisha. Their researchers, along with ZSI, that is Zoological Survey of India, they have discovered a new marine parasitic isopod species that you can see in the picture here. They have been named as Lobothorax Bharat. Let me write the name again. Lobothorax Bharat. This is the name, scientific name of these new marine parasitic isopod species that has been discovered recently. Next is related to sports. Students, Khelo India Para Games 25 were held and Haryana has topped the medal tally with a total of 34 medals or 34 golds. Right? What is the medal tally here for Haryana? Medal tally is 104, out of which 34 are gold, 39 are silver and 31 are bronze. This is the second edition of the Khelo India Para Games. This is a multi-sport para event that was held under the Government of India's Khelo India initiative. Location, where was this held? This question can also be asked. It was held in New Delhi. It was from 20 to 27th of March that this was held. Right? Haryana first, Tamil Nadu second, UP third, Rajasthan fourth and Maharashtra on the fifth position. Next is state news. Students, Sikkim's Chief Minister PS Tamang has presented 16,196 crore rupees budget for FY26. This budget is focusing on poverty and achieving total literacy. Here you will be seeing this budget is allocating almost 11,000 crore rupees for revenue expenditure, 5,000 crore rupees for capital expenditure, right? Apart from this, you will be seeing
For education, 17,303 crore rupees has been allocated, right, for education and sports sector. Then for health sector, 7,195 crore rupees has been allocated. For water supply and sanitation, 10,741 crore rupees has been allocated, and many more, right? So this is your budget for FY26 for second. So that's all for the day, students. Okay, one more news, that is seventh Act East Business Show held in Meghalaya. I repeat, 7th Act East Business Show. This was inaugurated by Meghalaya's Chief Minister Conrad Sangma in Shillong, Meghalaya, and this was a 3-day long event attended by various ambassadors and representatives of different countries. It was organized by Kolkata, West Bengal based Indian Chamber of Commerce in partnership with the government of Meghalaya. So this was the 7th edition of the Act East Business Show held in Meghalaya. So that's all for the day, students. Now let's move to revision part that will be beneficial for your learning in the long run. Next is, in March, the Lok Sabha Secretariat collaborated with the Ministry of Electronics and Information Technology to develop AI-powered solutions that is aiming at providing multilingual support and improving the parliamentary operations. Right? So it is your Sansad Bhashini. Next, at which institute ISRO's chairman Dr. V. Narayan inaugurated Shri S. Ramakrishnan Center of Excellence in Fluid and Thermal Science Research in March 2025. It is your IIT Madras, Indian Institute of Technology, Madras. Next, name the organization that in collaboration with India AI under MEITY launched the India AI Hackathon 25 themed mineral targeting using artificial intelligence. It is GSI, Google Geological Survey of India. Moving on, mention the city which is set to be launched or set to launch India first green waste processing plant under Swachh Bharat Mission Urban via public-private partnership model as announced in March 2025. It is of Indore, Madhya Pradesh. Next, RBI, they signed an MOU with Dash to promote the use of local currencies for cross-border transaction, aiming to boost the bilateral trade. So RBI, they sign an MOU with whom? With Bank of Mauritius, and this will promote the usage of local currency, that is Indian rupees and Mauritian rupiah, between the cross-border transaction. Next, mention the Indian literary theorist and Padma Bhushan awardee who was honored with the 2025 Hallberg Prize for her influence contribution to feminist theory, literary criticism and post-colonial thought. It is Gayatri Chakravarti Spivak. Next, Bajaj Finserv Limited, they acquired what percentage of stake held by Alliance SE in their Indian non-life and life insurance joint ventures in March 2025? It is 26%. Next, which spacecraft returned the astronauts Sunita Williams and Barry Butch Wilmore to Earth after the extended mission to the International Space Station? So what is the name of that aircraft? It is SpaceX Dragon capsule, and the mission was named as Crew 9. Next, identify the sport that was approved by International Olympic Committee for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games. It is boxing. Next, name the AI artificial intelligence chip which is set to launch in the second half of 2025 as announced by the Chief Executive Officer Jensen Huang of NVIDIA during the GTC 2025 conference in March 2025. It is Blackwell Ultra. Take a note of this. Next is, which country's Navy is jointly conducted the 23rd edition of the Varuna bilateral naval exercise with the Indian Navy from 19 to 22nd of March in the Arabian Sea. Which is it? Which country's Navy? It is France Navy along with Indian Navy, right? We are conducting this Varuna exercise, that is the 23rd edition of this exercise. Will be held in two phases. First is your harbor phase and second is your sea phase. Next, students, mention the Singapore-based payments infrastructure firm that partnered with NPCI International Payment Limited, that is your NIPL, on 19th of March to enable UPI transactions in Singapore. Now, UPI transaction, all the tourists visiting Singapore will be able to pay using UPI. So, which is the payment company of Singapore with which we have NIPL as partnered? It is HitPay. Next, mention the mascot unveiled by the Union Minister of Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandviya, for second Khelo India Para Games in Delhi. What is the mascot? It is Ujwala. Next, in March, the book titled March to Glory, the story of India's Dash World Cup win was published by Hockey Citizen Group. So, in March, the book titled March to Glory, the story of India's
1975 World Cup win was published by the Hockey Citizen Group. Next, the United Nations International Day of Happiness celebrated annually on 20th of March. What is India's rank according to the World Happiness Report of 2025? Our country stands at 118th position, and it is Finland that was on the first position, followed by Denmark, then Iceland, and then your Sweden. Next is mention the element that was discovered in March 2025 beneath the town of Folsville in the Moselle region of France by scientists, a significant step towards clean and sustainable energy. So what is that mineral or element that was discovered? So hydrogen was discovered, and we know that green hydrogen is considered as a fuel of future, as on its burning water vapor is released as a byproduct and no carbon or carbon dioxide or methane gas is released. Next, identify the acclaimed producer and head writer of Cartoon Network's animated series Courage the Cowardly Dog, who recently passed away. Very famous TV cartoon series, students, right? And the producer and head writer of this Courage the Cowardly Dog, that is David Stephen Cohen, has recently passed away. Next, according to Traction Technologies Limit report released in March, what is the total capital in billions raised by 7,000 women-led startups in India? So how much amount of the total money has been raised, total capital has been raised by 7,000 women-led startups in India? So the amount is being asked here. What is the amount here that has been raised? It is $26.4 billion. Next, in March, DPIIT, they partnered with which bank to promote innovation and support product startups, innovators and entrepreneurs across India? It is which bank? It is Yes Bank. Next, what is the revised minimum investment threshold for zero coupon, zero principal instrument on the social stock exchanges set by SEBI in March to make it more affordable for smaller investors? So what is the revised minimum investment here threshold? It is 1,000 rupees. Next, mention the country that emerged as the largest source of remittance to India in FY24 as per the changing dynamics of India's remittances. Insights from the 6th round of India's remittance survey published by RBI in March 2025. Which is it? It is UAE, United Arab Emirates. I correct myself, not UAE, it is United States of America, right? Is the largest source of remittance to India. Next, identify the company that signed an MOU with Bluge Aerospace Private Limited, Agency for New and Renewable Energy Research and Technology, that is ANERT, and for Cochin International Airport Limited in March to establish the world's first hydrogen-fueled vertical takeoff and landing aviation ecosystem. That means if this is a ground, then directly vertical takeoff and landing can be done by these aircraft that are basically the bigger version of the drones. Right, so which identify that company? It is Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL. They signed the MOU with these two organizations, right? That is an airport and Bluge Aerospace Private Limited. Next, who was honored with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Services through Cultural Leadership at United Kingdom Parliament in March 2025? It is Konidela Chiranjeevi, that is K. Chiranjeevi, right? He is an Indian veteran actor, a Padma awardee conferred with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Service. Next, students, let's move to the homework section. First is name that state or name that university Karnataka will be renaming to renaming in honor of Manmohan Singh. Name that city or name that university that will be renamed by Karnataka. Second question, recently in the world's strongest insurance brand report or index, which insurance companies secured the first position, second position and third position? Third question, which INS participated in the Mauritius National Day celebration for 2025? Fourth question, recently HDFC Bank, they have launched which project to support the Indian Air Force veterans and their families? Fifth question, tell me recently who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited. So these are your homework questions, students, and I want to see maximum participation from all the students watching this video. Maximum to maximum I want answers on these क्वेश्चंस. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे.
तो दोस्तों आज की वीडियो में 29 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, हम डेली सुबह 5 बजे वीडियो अपलोड करते हैं डेली करंट अफेयर्स की, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं एंटी टैंक मिसाइल्स एंड लाइट व्हीकल्स के लिए। देन हम बात करेंगे रिपल्स ऑफ चेंज, ये एक बुक लॉन्च की गई है अभी रिसेंटली, एंड एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, उसको डिस्कस करेंगे। देन एक एमओयू साइन किया गया बाइसेक एन के साथ फॉर जियो स्पेशल ऑडिट एनहेंसमेंट। एआई, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, इन सब का यूज किया जाएगा ताकि ऑडिटिंग को और बेटर किया जा सके। देन ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें तो ये रिलीज की गई, किन्होंने टॉप किया, इंडिया में से कौन रिच पे रहा, सबसे ज्यादा बिलियनर्स कहां पर है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, सब्सक्राइब जरूर से करना। वी आर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, एंड शेयर कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, कजन्स, रिलेटिव, नेबर्स सभी के साथ, एंड लेट देम नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेशनल अफेयर्स पे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2500 करोड़ रुपए का दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, बल्कि फॉर एंटी टैंक मिसाइल्स एंड लाइट व्हीकल्स। एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? NAMIS। ये है नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक्ड वर्जन, राइट। ये आपकी एंटी टैंक मिसाइल है। ये कॉन्ट्रैक्ट है 1801 करोड़ रुपए का, एंड हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड DRDL, जो कि है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, ये DRDO का ही हम है, इनके द्वारा बनाई गई है। एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है हमारा लाइट व्हीकल्स को प्रोक्योर करने के लिए। 5000 यूनिट्स इसकी प्रोक्योर की जाएंगी 698 करोड़ की लागत से, राइट। एंड इनको बना कौन रहा है? फोर्स मोटर्स एंड महिंद्रा, राइट। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल। इन्होंने लॉन्च करी एक बुक जो कि है रिपल्स ऑफ चेंज, राइट। ये बुक लॉन्च की गई जो है रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम्स इन इंडिया, राइट। एंड ये इसी के साथ साथ, ये तो हो गई पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की इन न्यू दिल्ली। देखो, इन दोनों चीजों का एम क्या है कि हम स्वच्छता की ओर बढ़ें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ एंड जल जीवन मिशन के साथ मिलकर इसको प्रमोट किया गया है यहाँ पर, राइट। हम क्लीनलीनेस के ऊपर ध्यान दें, हम जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर ध्यान दें, कम्युनिटी लीडरशिप के ऊपर ध्यान दें, राइट। एंड कैसे हम कम्युनिटी को साथ लेके आगे बढ़ सके, करेक्ट। तो ये बुक याद रखेंगे, एंड अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इन्होंने एक MOU साइन किया है बाइसेक एन के साथ, जो कि है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, राइट। ये MEITY के अंडर आता है ये इंस्टीट्यूट या ये ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसका एम क्या है कि हमारी जो ऑडिटिंग प्रोसेस है किसी भी कंपनी की, उसको हम और बेटर कर सकें, उसको एडवांस कर सकें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका यूज करके हम कैसे ऑडिटिंग टूल्स को बेटर कर सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, जिससे हम देखेंगे कि लोगों तक जो राइट इंफॉर्मेशन है वो पहुंच सकेगी, राइट। एंड कंपनीज तरीके से अगर ऑडिट करेंगी तो कोई घपला भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 की अभी रिलीज की गई, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई, एंड इलॉन मस्क ने यहाँ पे टॉप किया। लेट मी शो यू फर्स्ट, बारी बस से चलते हैं। सबसे पहले अगर हम रिचेस्ट पर्सन की देखें तो इलॉन मस्क ने टॉप किया। 420 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है, चेंज होती रहती है ये काफ़ी अप डाउन, बट ये पहले इंडिविजुअल बन गए जिन्होंने 300 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस किया, एंड देन 400 बिलियन डॉलर का भी मार्क क्रॉस करने वाले ये पहले इंडिविजुअल बन गए हैं। टारगेटेड है कि 2027-2028 तक ये वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे।
फिर आ जाते हैं जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, लैरी एलिसन, वॉरेन बफे एंड सो ऑन। राइट, ये तो हो गए रिचेस्ट। इसके बाद अगर हम देखें सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो यूएसए में नंबर ऑफ बिलियनियर्स सबसे ज्यादा है। राइट, 870। चाइना में सेकंड 823, देन हमारा इंडिया थर्ड पे आ जाता है 284, देन यूके, देन जर्मनी। करेक्ट। देन नेक्स्ट चीज याद रखेंगे, ये जो लिस्ट रिलीज की गई है ये 14th एडिशन रिलीज की गई है ग्लोबल रिच लिस्ट। इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी, राइट, जो चेयरमैन है अडानी ग्रुप के, इनकी नेटवर्थ रही $97 बिलियन अलॉन्ग विथ गौतम अडानी एंड रोशन नादल मल्होत्रा, इनकी नेट वर्थ है $40 बिलियन, जो कि 5th रिचेस्ट वीमेन बन गई हैं वर्ल्ड की एंड पहली इंडियन वीमेन टू एंटर द ग्लोबल 10 वेल्थिएस्ट वीमेन लिस्ट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट, एक और चीज, अगर हम बात करें किस सिटी में सबसे ज्यादा हमें बिलियनर्स देखने को मिलते हैं, तो न्यूयॉर्क हैज रिक्लेम्ड देयर पोजीशन एज द ग्लोबल बिलियनियर कैपिटल। राइट, ये ग्लोबल बिलियनियर कैपिटल है। वहीं पे लंदन देखें ये सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे 19वें SMW। ये SMW क्या है, ये है आपका सिंगापुर मैरीटाइम वीक। अभी इसका 19वां एडिशन हमें देखने को मिला था, 24 से लेके 28 मार्च तक ये देखने को मिलता है। ये किसके द्वारा कराया गया था, इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। एंड सिंगापुर की जो डेवलपमेंट है, नेशन बिल्डिंग है, उसके 60 साल पूरे हो गए हैं, उसको कमेमोरेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया इस सिंगापुर मैरीटाइम वीक को। इसकी थीम क्या रहेगी, थीम भी याद रखेंगे, एक्शंस मीट एम्बिशन। आई रिपीट, एक्शंस मीट एम्बिशन इसकी थीम रहेगी। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे आ जाते हैं GFIC 37। राइट, ये GFIC क्या है, सबसे पहले ये एक इंडेक्स है स्टूडेंट्स, ये है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स की, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उनका एक इंडेक्स है कि कौन सा सबसे बेटर इंडेक्स है। राइट, 119 फाइनेंशियल सेंटर्स को यहाँ पे कॉम्पिटिट किया गया, मतलब उन्होंने इसमें कॉम्पिटिट किया इस सेमी एनुअल रिपोर्ट में, एंड ये 37th एडिशन है इस इंडेक्स का। करेक्ट। देन हम जानते हैं इंडिया में जिफ सिटी है, राइट, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, एंड ये कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में। ये इंडेक्स में 40th पोजीशन पे रहा, पहले 45th पोजीशन पे था लेकिन इंप्रूव होता हुआ दिखा, अब ये 45th पोजीशन पे आ गया इन द फिनटेक रैंकिंग। एंड इन्होंने टॉप किया है रेपुटेशनल एडवांटेज कैटेगरी में, एक रेपुटेशनल एडवांटेज कैटेगरी है, राइट, इस इंडेक्स की, उसमें हमारी जिफ सिटी ने यहाँ पे टॉप किया है। करेक्ट। एंड हमारी जो फिनटेक रैंकिंग है वो इंप्रूव होती हुई दिखी, मैंने जैसे बताया 45th थी, अब वो 40th आ गई है, मतलब हम अच्छी हमारी रैंकिंग हुई है फिनटेक सेक्टर में। देन टॉप पर कौन सा है इंडेक्स है, वो है न्यूयॉर्क सिटी का आपका, नॉट इंडेक्स, टॉप पर फाइनेंशियल सेंटर न्यूयॉर्क का फर्स्ट पोजीशन पे, देन लंदन सेकंड, हांगकांग थर्ड, सिंगापुर फोर्थ, सैन फ्रांसिस्को फिफ्थ, जिफ सिटी हमारा 46th पोजीशन पे आ जाता है, मुंबई इंडिया 52nd पे एंड न्यू दिल्ली 60th पोजीशन पे। मूविंग ऑन, इंडोनेशिया ने अभी ज्वाइन किया ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक को, ये अब 11th मेंबर बन गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ये एक बैंक है जो कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बेस्ड है, एंड इवन अगर याद रखेंगे इंडोनेशिया 10वां मेंबर बन गया था ब्रिक्स का अभी जनवरी 2025 में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, IUCN के द्वारा पहली ग्रीन स्टेटस असेसमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई फॉर लायन इन अफ्रीका एंड इंडिया। देखो लायन का अगर हम सबसे पहले देखें तो लायन का साइंटिफिक नाम बताओ मेरे को सबसे पहले, वो क्या होता है, वो है पैंथेरा लियो। राइट, अभी IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हेडक्वार्टर कहां पर है इनका, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो इनके द्वारा पहली ग्रीन असेसमेंट या फिर ग्रीन स्टेटस असेसमेंट फॉर द लायन ये रिपोर्ट रिलीज की गई, एंड इसमें जो लायंस को है ना लार्जली डिप्लीटेड यहाँ पे लिखा गया है, राइट, डिपिक्ट किया गया है, लार्जली डिप्लीटेड, मतलब कहीं ना कहीं लायंस की जो पॉपुलेशन है वो कम होती हुई दिख रही है, राइट। एंड IUCN की रेड लिस्ट होती है, हम जानते हैं, जिसमें वल्नरेबल एंडेंजर्ड एनिमल्स का डाटा या फिर उनको लिखा जाता है, उनको बताया जाता है कि वो वल्नरेबल है, एक्सटिंक्शन है, क्या है, उस लिस्ट में जो लायंस है उनको वल्नरेबल यहाँ पे घोषित किया गया है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आते हैं। IREDA इन्होंने अभी 26 बिलियन जैपनीज येन की एक लोन यहाँ पे सिक्योर करा है, ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन रहेगा, एंड इनको ये लोन मिला कहाँ से, SBI की ब्रांच
जो कि टोक्यो जापान में है, उनसे इनका ये लोन अप्रूव हुआ है IREDA का 26 बिलियन जैपनीज येन का। अगर इसको कन्वर्ट करें तो 1476 करोड़ रुपए का ये लोन रहेगा, राइट। अब ये लोन कहाँ पे यूज़ किया जाएगा? ये इंडिया में कॉस्ट इफेक्टिवली यूज़ किया जाएगा, डोमेस्टिक मार्केट को ग्रो करने के लिए यूज़ किया जाएगा, राइट। तो IREDA एंड फोकस रहा जाएगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में उस प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे फंडिंग और मिल सके, राइट। तो किनको लोन मिला? IREDA क्या है? ये एक नवरत्ना CPSE है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 1476 करोड़ रुपए का लोन मिला, राइट। ये एक ECB है बेसिकली। ये क्या है? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन है, फिक्स रिटर्न पे मिलता रहेगा 5 साल तक के बाद। यहाँ पे IREDA एक ही वन वे में, मतलब सिंगल पेमेंट में इस सारे अमाउंट को यहाँ पे पे बैक कर देगी। IREDA की अगर मैं बात करूँ, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? प्रदीप कुमार दास। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में 1987 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जीका, जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी। इन्होंने 6 ODA लोन अग्रीमेंट साइन किए हैं वर्थ 11,181 करोड़ रुपीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये क्या है? ODA है आपका ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। अब जो ये लोन लिया गया ना, ये बेसिकली 6 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा, जैसे सी वाटर डिसैलिनाइजेशन प्लांट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, एक्वाकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली मेट्रो का फेज 4। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। RBI ने इम्पोज की पेनल्टी ऑन HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड KLM एक्सिवा फिनवेस्ट पर। HDFC बैंक पे कितनी पेनल्टी इम्पोज की गई है? HDFC बैंक पर आप देख सकते हैं 75 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई। KYC रेगुलेशंस इन्होंने फॉलो नहीं की। देन PSB पे, पंजाब एंड सिंध बैंक पे 68.2 लाख रुपीस की पेनल्टी इम्पोर्ट की गई फॉर नॉट रिपोर्टिंग ऑफ बोरर्स विद द नॉन फंड एक्सपोजर ऑफ 5.5 करोड़ और मोर। देन KLM एक्सिवा फिनवेस्ट पे 10 लाख रुपए की जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है उनसे, उनकी जो रेगुलेशन है उनसे इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। जूनो जनरल इंश्योरेंस, ये इंडिया की पहली इंश्योरर बन गई है जिन्होंने PHYD ये स्टैंडर्ड फीचर इंट्रोड्यूस किया है मोटर इंश्योरेंस में। अब PHYD क्या होता है? पे हाउ यू ड्राइव। आपके मोबाइल फोन में एप्लीकेशन होगी एक, वो यहाँ पे आपकी गाड़ी के साथ कनेक्टेड रहेगी। उससे पता रहेगा कि आप कितनी फास्ट गाड़ी चला रहे हैं, कितनी स्लो गाड़ी चला रहे हैं, किस स्पीड पे चला रहे हैं, क्या आपका ब्रेकिंग सिस्टम है, कैसे आप गाड़ी पे ब्रेक मारते हैं, राइट, किस तरीके से आप गाड़ी को हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ों का ध्यान देख के, बिहेवियर देख के आप कट मारते हैं, फास्ट चलाते हैं कैसे, इन सभी चीज़ों की बेसिस पे आपका जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम सेलेक्ट होगा। अगर आप अच्छी गाड़ी चलाएंगे तो आपका प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड अच्छी नहीं चलाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ भी जाएगी, राइट। तो जूनो जनरल इंश्योरेंस वो पहला इंश्योरर बन गया जिन्होंने इंटीग्रेट किया इस पे हाउ यू ड्राइव स्टैंडर्ड फीचर को मोटर इंश्योरेंस में, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। ल्यूमिनस, इन्होंने एक MOU साइन किया SBI के साथ ताकि सोलर फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सके इंडिया में। आई रिपीट, ल्यूमिनस ये एक गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड है, इंडिया की लीडिंग सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस कंपनी है। इन्होंने MOU साइन किया है मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि सोलर फाइनेंसिंग को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन पे। राणा दास गुप्ता, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने 2025 का विंधम कैंपल प्राइज जीता फॉर नॉन फिक्शन कैटेगरी। ये चीज़ ज़रूर याद रखेंगे, किस कैटेगरी में? नॉन फिक्शन कैटेगरी में इन्होंने जीता है ये विंधम कैंपल प्राइज 2025 का। येल यूनिवर्सिटी USC की जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। एंड राणा दास गुप्ता ये एक ब्रिटिश ऑथर है, ब्रिटिश ऑथर है, इंडियन ओरिजिन के, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पर। राजीव गौबा, इनको अपॉइंट किया गया 5वां फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग के ये 5वें फुल टाइम मेंबर बन गए हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। राजीव गौबा 1982 बैच के IAS ऑफिसर हैं एंड इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है की गवर्नमेंट पॉलिसीज में एंड रिफॉर्म्स में। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पर। स्पेसएक्स के द्वारा HEX-20 की सैटेलाइट लॉन्च की गई स्पेस में। ये HEX-20 की सैटेलाइट है, नीला मिशन ये रहेगा, राइट। एंड HEX-20 ये एक स्टार्टअप है स्मॉल सैटेलाइट्स का, स्टार्टअप ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स, राइट। तो नीला को यहाँ पे लॉन्च किया गया स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 3 मिशन के द्वारा, जो कि एक सर्विस है स्पेसएक्स के द्वारा ऑफर की जाती है दूसरी कंट्रीज की या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की स्पेस सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाने के लिए, राइट। एंड नीला ये नेम रखा गया इसका ऑन द बिहाफ ऑफ द रिवर नीला जो कि केरला में है। नेक्स्ट आ जाते हैं
त्रिवेंद्र, एक और चीज़, ये त्रिवेंद्रम केरला बेस्ड, ये आपकी हेक्स 20 इंडिया का स्मॉल सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। BU जो कि है बैरामपुर यूनिवर्सिटी, ये ओडिशा में रहेगा। इनके रिसर्चर्स एंड ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर की गई न्यू मरीन पैरासिटिक आइसोपॉड स्पीशीज को नाम क्या रखा गया इसका? लोबोथोरेक्स भारत, राइट। ये इंडिया को ऑनर करने के लिए इस नई मरीन पैरासिटिक आइसोपॉड स्पीशीज का नाम रखा गया लोबोथोरेक्स भारत। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर स्टूडेंट्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी हमें देखने को मिले थे एंड हरियाणा ने यहाँ पे टॉप किया है मेडल टैली में 34 गोल्ड मेडल के साथ। हरियाणा के टोटल गोल्ड मेडल कितने थे? तो हरियाणा के टोटल थे 104 मेडल, राइट। ये सही याद रखेंगे। सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में 20 से 27 मार्च के बीच में, एंड ये पार्ट रहेगा आपका खेलो इंडिया इनिशिएटिव के अंडर। देन इसी के साथ हरियाणा ने टॉप किया, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड यूपी, फोर्थ राजस्थान एंड फिफ्थ महाराष्ट्र। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर PS तामंग जी के द्वारा 16,196 करोड़ रुपए का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर FY26, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इसी के अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने काफ़ी सारी पैसे को इन्वेस्ट करने की बात की गई इन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर बात की गई, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हर सेक्टर में कहीं ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद आ जाते हैं 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस के। आई रिपीट, 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस, ये अभी शो था, मेघालय में हुआ, राइट। इसको कहाँ पे कराया गया था? शिलोंग मेघालय में। इसको इनॉग्रेट किया गया था मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा के द्वारा, एंड कई सारे रिप्रेजेंटेटिव्स, एम्बेसडर फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड ICC के द्वारा यहाँ पे इवेंट कराया गया था इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट ऑफ मेघालय। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड इससे क्या होगा? कई सारी पॉलिसीज हमें देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा? यहाँ पे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, मेघालय की इन्वेस्टमेंट आती हुई हमें दिखेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर फॉर बेटर लर्निंग। Students, let's discuss some one-liners. Let's start with national news. India, Mauritius, they have signed 8 MOUs to bolster strategic economic relations. Then India and Chile's first joint working group meeting on agriculture was held recently. PM Modi handed over the overseas citizen card to Mauritius counterpart. Then government launched $1 billion fund for the creators economy ahead of the Waves 25. Then Patel inaugurated the Water Sustainability Conference 2025. And PB Shabd, that is a free subscription, has been extended till 2026 to support the media organizations. Next thing is the 10th edition of the Raisina Dialogue held in New Delhi, inaugurated by PM Modi. Then Fit India Carnival held in New Delhi, inaugurated by Mansukh Mandviya ji. And CCI has approved the acquisition of Uprising Science Private Limited by Hindustan Unilever Limited, that is HUL. Then Meghalaya inaugurated the first scientific coal mine after nearly a decade-long ban on that. Next is banking and finance. Valuetics Reinsurance set to become India's first private reinsurer. Then India to become the world's third largest economy by 2028 as per the data released by Morgan Stanley. We will be surpassing whom? We will be surpassing Germany. Then Yes Bank launches seamless GST payment facility for businesses and individuals. Infibeam has partnered with Sutex Cooperative Bank for enhancing net banking facility. Standard Chartered has raised €1 billion via first social bond. Then Piramal Finance and Punjab and Sindh Bank, they have joined hand to expand the credit access to the MSMEs. Then Satyam Micro Capital, they have unveiled the bold vision to empower 10 million households by 2030. And HDFC Bank, they are now accepting deposits under Senior Citizen Savings Scheme. Next is wholesale price inflation, that is WPI. It has risen by 38% in the month of Feb 2025. Next is appointments and resignation. Shiv Kumar Kalyanaram assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then I repeat, Shiv Kumar Kalyanaraman, right, assumed the charge as the CEO of Anusandhan National Research Foundation. Then Stuart Young to be sworn in as the new Prime Minister of Trinidad and Tobago. Then Tractors and Farm Equipments Limited, that is TAFE, has been appointed as the Lakshmi Venu as their new chairman. Then Vikas Koshal takes charge as the HPCL chairman and managing director, who has been appointed as
New MD and CEO of Bajaj Auto, Rajiv Bajaj ji. Then RBI has named Indranil Bhattacharya as the new executive director. And Mithili Balasubramaniam named the interim managing director and CEO of Eldevez ARC, that is your asset reconstruction company. Next is awards. RBI awarded Digital Transformation Award 2025 for digital initiatives. Then Bengaluru Airport has won the Air Service Quality Award for the third year consecutively. Next is hydrologist Gunter Bloschel has won the 2025 Stockholm Water Prize. Sustainable Airy Silk from Northeast secure the global recognition with Ecotex certification that is given by the country Germany. Next is Vetan sculpture Ram Sutar chosen for Maharashtra Bhushan Award 2024. Next is related to sports. Jharkhand crowned 15th Hockey India Senior Women's National Championship. Right? So 15th edition of Hockey India Senior Women National Championship. Who is it? Jharkhand. Then India Masters has beaten West Indies Masters by 6 wickets to clinch the International Masters League T20 title. Then Kabaddi World Cup 2025 began in England and India concluded Special Olympics Winter Games with 33 medals. IOC board has approved boxing for inclusion in the 2028 Los Angeles Olympic Games and India has secured 33 medals at the Special Olympic Winter Games 2025. Australian Grand Prix 25 was held and McLaren's Lando Norris has won the F1 season opener and India to host the 11th Asian Swimming Championship in Ahmedabad. So these were your important one-liner students. Now let's move to some other MCQ questions. अभी आरबीआई ने साइन किया एक एमओयू किसके साथ? बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ, ताकि इंडियन रुपीस एंड मॉरिशियन रुपी के बीच में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है वो कैरी आउट कर सके एंड हम इन दोनों कंट्रीज को लोकली यहाँ पे प्रमोट कर सकें ट्रेड के लिए. नेक्स्ट आ जाते हैं. Next is students mention the Indian literary theorist and Padma Bhushan awardee who was honored with the 2025 Holberg Prize for her influential contributions to feminist theory, literary criticism and post-colonial thought. तो कौन है? वो है गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक. नेक्स्ट आ जाते हैं बजाज फिनसर्व लिमिटेड. इन्होंने एक्वायर किया व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टेक हेल्ड बाय अलायंस एसई इन देयर इंडियन नॉन लाइफ एंड लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर इन मार्च 2025. तो 26% का स्टेक रहेगा यहाँ पे. नेक्स्ट आ जाते हैं किस स्पेस क्राफ्ट ने रिटर्न किया सुनीता विलियम्स एंड बुच विलमोर को फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 9 months. तो स्पेस कौन सा था वो स्पेस क्राफ्ट? वो है स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल एंड यहाँ पे जो मिशन का नाम था वो था क्रू 9. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द स्पोर्ट दैट अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर इंक्लूजन इन 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में जो स्पोर्ट्स ऐड किया जाएगा वो है बॉक्सिंग. नेक्स्ट नेम द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप जिसको लिया अभी लॉन्च किया जाएगा इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2025 अनाउंस्ड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जेंसन हुआंग ऑफ एनवीडिया. तो क्या नाम रहेगा उस चिप का? वो है ब्लैकवेल अल्ट्रा. एआई चिप रहेगी ये. नेक्स्ट किस कंट्री की नेवी ने अभी जॉइंटली कंडक्ट किया 23rd एडिशन ऑफ वरुणा बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज विद द इंडियन नेवी फ्रॉम 19 to 22 ऑफ मार्च इन अरेबियन सी. तो किसके साथ? वो है इंडियन नेवी एंड फ्रांस नेवी के बीच में थी, रॉयल नेवी ऑफ फ्रांस. एंड ये 23वां एडिशन है इस एक्सरसाइज का. 2 फेज में हुई थी, हार्बर फेज एंड सी फेज में. नेक्स्ट तो अभी रिसेंटली सिंगापुर बेस्ड एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है जिन्होंने इंडिया के एनआईपीएल क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ पार्टनर किया ताकि जो ट्रैवलर्स इंडिया से सिंगापुर जाते हैं घूमने वो यूपीआई की पेमेंट कर सके उनकी लोकल इकोनॉमी में. तो एनआईपीएल ने यहाँ पे हिटपे के साथ पार्टनर किया जो सिंगापुर की पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म रहेगी. नेक्स्ट मेंशन द मैस्कॉट अनवेल बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया फॉर सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो कि दिल्ली में होंगे. तो उज्ज्वला नाम का वो मैस्कॉट रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं उस बुक का नाम है मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज डैश वर्ल्ड कप विन जो कि पब्लिश की गई हॉकी सिटीजन ग्रुप के द्वारा. तो इंडिया की 1975 विक्ट्री के बारे में दर्शाया गया है इस बुक में. नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. ये सेलिब्रेट किया जाता है 20 मार्च को. इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में? तो इंडिया 118वें पोजीशन पे आ जाता है. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? वो है फिनलैंड. फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? फिनलैंड. सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है डेनमार्क. देन डेनमार्क के बाद आइसलैंड एंड फिर स्वीडन 4th पोजीशन पे. नेक्स्ट मेंशन द एलिमेंट जिसको डिस्कवर किया गया इन मार्च 2025 बीनीथ द टाउन ऑफ फॉल्शविलर इन द मोसेल रीजन ऑफ फ्रांस बाय साइंटिस्ट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी. तो उस एलिमेंट को कौन सा एलिमेंट डिस्कवर किया गया? ग्रीन हाइड्रोजन. यहाँ पे हाइड्रोजन डिस्कवर किया गया है. हाइड्रोजन की एक पार्ट हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, राइट, जो कि क्लीन फ्यूल माना गया है. फ्यूचर फ्यूल बोला जा रहा है इसको. एंड इसके बर्न करने पे इसका जो रेजिड्यू होता है वो हाइड्रोजन मतलब वाटर निकलता है, वाटर वेपर्स.
नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अक्लेम्ड प्रोड्यूसर एंड हेड राइटर ऑफ कार्टून नेटवर्क्स एनिमेटेड सीरीज जो थी करेज द कावरली डॉग, इनका रिसेंटली निधन हो गया मार्च 2025 में। ये कौन है? डेविड स्टीवन कोहन। काफी फेमस था ये करेज द कावरली डॉग, इवन मैं अपने बचपन में इसको देखता था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया जो टोटल कैपिटल रेज किया गया है 7000 वीमेन लेड स्टार्टअप्स के द्वारा इंडिया में, वो कितना अमाउंट रेज किया गया है? टोटल अमाउंट वो है 26.4 बिलियन डॉलर यहाँ पे रेज किए गए हैं। एंड इंडिया में 7000 से भी ज्यादा एक्टिव वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। नेक्स्ट, डीपीआईआईटी ने पार्टनर किया किस बैंक के साथ टू प्रमोट इनोवेशन एंड सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया? तो येस बैंक के साथ यहाँ पे इन्होंने टाई अप किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिवाइज्ड मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड फॉर जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेट बाय सेबी, ताकि मोर अफोर्डेबल बनाया जा सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट को। तो 1000 रुपये का रहेगा ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट, मेंशन उस कंट्री को मेंशन करो दैट एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडिया इन FY24। इंडिया एक लौती कंट्री है जहाँ पे 100+ बिलियन डॉलर का हम रेमिटेंस रिसीव कर रहे हैं एंड सबसे ज़्यादा हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये रेमिटेंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस कंपनी को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने एक MOU साइन किया ब्लूज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, ताकि जो इनका एविएशन इकोसिस्टम है उसको VTOL के ऊपर लाया जा सके, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। मतलब खड़े खड़े यहाँ पे ऐसे टेक ऑफ हो जाएगा, वर्टिकली टेक ऑफ लैंड हो जाएगा। ये बेसिकली ड्रोन्स ही होते हैं, लेकिन ये बड़े ड्रोन्स होते हैं जो कि इवन ह्यूमंस को कैरी कर पाएंगे, राइट। तो कौन सी कंपनी रहेगी जिन्होंने ये किया है? ये कंपनी का नाम रहेगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप एट यूनाइटेड किंगडम पार्लियामेंट इन मार्च 2025। तो वो है के चिरंजीवी, काफी फेमस वेटरन एक्टर है, राइट। पद्मा अवार्डी भी रह चुके हैं एंड इनको यूके के पार्लियामेंट के द्वारा इससे सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल, इन्होंने रिसीव किया स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फ्लड रिस्क रिडक्शन एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी इलेक्ट किया गया जो कि पहली फीमेल एंड 10th प्रेसिडेंट बनी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की आफ्टर विनिंग अ सीक्रेट बैलेट अमंग द 7 कैंडिडेट्स ड्यूरिंग 144th IOC सेशन इन मार्च 2025। तो यह क्रिस्टी ले कोवर्टी स्टूवर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, बजाज ऑटो लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया रीअपॉइंटमेंट ऑफ किनका एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर 5 सालों के लिए। तो राजीव बजाज जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है रीअपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द स्टेट इन इंडिया जिसने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन एम्ड एट इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द एल्डरली पॉपुलेशन। तो केरला स्टेट वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने सीनियर सिटीजन कमीशन को यहाँ पे लॉन्च किया है, इस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल वाज नॉट अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय IRDAI। तो इनमें से किनको अपॉइंट नहीं किया गया था? संजीव सनियाल को यहाँ पे मेंबर अपॉइंट नहीं किया गया था इस कमेटी का। ये बेसिकली क्या है, अलग अलग सेक्टर में क्या इंश्योरेंस की पॉलिसीज होनी चाहिए उसको डिस्कस करेगी। नेक्स्ट, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया सक्सीडिंग कैमिल मदूरी। तो कौन बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर? वो है सारा जाफरानी ज़ंजरी एंड ये सक्सीड करेंगी किनको? ये कमिल मादुरी को सक्सीड करेंगी एंड ये सेकंड वीमेन प्रेसिडेंट बनी है, सेकंड वीमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है ट्यूनीशिया की। नेक्स्ट, विच कंट्री अपॉइंटेड नेतुम्बू नांदी नादियाविच एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द 35th इंडिपेंडेंस डे। तो नामीबिया के द्वारा यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट डिड बेन कैपिटल कमिट थ्रू प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट एंड वारंट्स टू एक्वायर 18% फुल्ली डायल्यूटेड स्टेक इन मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड। तो कितना? वो है 4385 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रेफरेंशियल इक्विटी अलॉटमेंट इन्होंने इशू किया, कमिट किया। नेक्स्ट, किस बायोटेक स्टार्टअप ने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम इंडियन पेटेंट ऑफिस इन मार्च फॉर द पेटेंट ऑफ द वर्ल्ड की पहली बाई स्पेसिफिक 3rd जनरेशन काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल्स को, जो कि है CAR T सेल्स इन इंडिया। ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज होंगे बेसिकली, तो डायरेक्टली याद रखेंगे। तो इनके लिए पेटेंट रिसीव हुआ है, कौन सी है वो है सेलुजन थेरेप्यूटिक प्राइवेट लिमिटेड एंड राइट, इनको यहाँ पे पेटेंट ग्रांट किया गया इंडियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द होमवर्क सेक्शन। फर्स्ट इज नेम दैट स्टेट और नेम दैट यूनिवर्सिटी कर्नाटका विल बी रीनेमिंग टू or renaming in honor of Manmohan Singh. Name that city or name that university that will be renamed by Karnataka. Second question, recently in the world's strongest insurance brand report or index,
Which insurance company secured the first position, second position, and third position? Third question. Which INS participated in the Mauritius National Day celebration for 25 or 2025? Fourth question. Recently, HDFC Bank, they have launched which project to support the Indian Air Force veterans and their families? Fifth question. Tell me recently who has been appointed as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited. So these are your homework questions, students, and I want to see maximum participation from all the students watching this video. Maximum to maximum, I want answers on these questions.